Hello everyone, welcome back. Today I'm here with this important topic of molecular biology, that is genetic code. In this presentation I will try to discuss about what is genetic code and what is the historical background of genetic code, means how they were deciphered, then what are the various properties of genetic code. Firstly, what is genetic code? As we know that information is transferred in the form of special definite sequences of bases from DNA to RNA, that is mRNA, and from mRNA to the definite sequences of amino acids in a polypeptide. So those sequences which are present on mRNA are known as codons, and these are also known as genetic, and these sequences are also known as genetic code because they code for special amino acids to form a particular polypeptide. So firstly, what is genetic code? As we know that there are sequences which are present on the coding DNA strand in the direction of 5' to 3' direction, and they specify the same order of amino acids in a polypeptide from N terminal to C terminal. So जो special sequences होते हैं DNA के ऊपर in the direction of 5' to 3' direction, वैसे ही sequence में जो polypeptides हैं, they contain amino acids. And it contains the one end that is known as N terminal and the other end is known as C terminal in case of polypeptide, because it contains free amino group in one end and in second end there is free carboxylic group, which is termed as C terminal. And the sequence of DNA is transcribed into mRNA, that is the transcription process. Then finally these sequences on mRNA are translated into actual protein by the process of translation, and the nucleotide sequences of mRNA and amino acid sequences of the polypeptide, which is dictated by the code. So these codes are known as genetic code. जो ये codes होते हैं, these codes are known as genetic code. So firstly, जो DNA है that will transcribe mRNA, and the mRNA contains these sequences of bases, and these three bases will code for amino acid, which are known as genetic code or codons. There are sequences which are present on mRNA and is read in the triplet form, which is referred to as codon, and these codons specify one particular amino acid. So these sequences which are present on this mRNA, which is formed by transcription process from DNA, so these base sequences which are present in triplet form, and this triplet form is known as codon, और ये जो codon होता है that code for a particular amino acid. There are certain codons जो किसी भी amino acid के लिए code नहीं करते हैं, which are known as nonsense codon, terminator codon or stop codon. So these are UAG, UGA and UAA, and we use different names for these terminator codons. So on RNA they're present, like we have this UAG, UAA, UGA. These all three codons are stop codons, and the term used for this UAG is amber, UAA is ochre, and for UGA is opal. So these are the names used for these stop codons. Then there is difference in translation process in prokaryotes and eukaryotes. In case of prokaryotes, the first amino acid that is coded by AUG, which is formylated, that is formylated methionine, while in case of eukaryotic translation there is simple methionine, there is no need of formylation, and in both cases, that is in prokaryotes as well as eukaryotes, this amino acid is coded by initiator codon, that is AUG. So जो AUG है that act as a initiator codon. In some cases there is another codon which is known as GUG that also act as a initiator. Next comes historical background of genetic code, how 4 letters making RNA, that is AUGC, can code for at least 20 standard amino acids. So this is basically historical background. So there are scientists who worked on this. They showed that there is definitely a combination of these bases which will code for these 20 amino acids. So 4 being a much smaller number, it was clear that it has to be a combination of some of these letters, that are bases, that is AUGC. So this shows that if there was a singlet code, then there were only 4 codons. तो चांसेस थे कि 4 ही कोडोन हो,
when these are present in doublet form, so there were chances that there will be total 16 codons, and it is not possible for 16 codons to form 20 amino acids. So then they again studied these codons in detail and found that these are present in triplet form. When they are present in triplet form, there are total 64 combinations. There are 64 codons. Out of these 64 codons, there are some codons which act as a stop signal for translation. These are known as stop codons, and there are 3 stop codons, and rest of the codons will code for 20 amino acids. So in 1965, Nirenberg and Khorana had unraveled the entire genetic code using cell-free systems. So this was the biggest achievement in the field of science by using some other special techniques. They identified the amino acids or stop signals corresponding to each one of the nucleotide codons. So इन्होंने ये देखा कि जो codons हैं वो किसी amino acid के लिए कोड करते हैं, but there are some codons which also act as a stop signal, means जो translation को stop करते हैं. And for this huge contribution, Nirenberg, Khorana, along with Robert Holle, they received a Nobel Prize in the field of physiology and medicine in 1968. For this work, they got this Nobel Prize in 1968. Robert W. Holle, who gave the clover leaf-like structure of tRNA, then Hargobind Khorana, and Marshall W. Nirenberg. Next, degenerate genetic code and Wobble hypothesis. So this is very important. So how these 61 codons code for 21 acid? It means there is possibility that more than one codon code for a single amino acid. So using all 4 types of nucleotides in making a possible different triplets, but there are only 20 standard amino acids occurring in natural proteins, and hence one can understand that one amino acid will be coded by more than one triplet codon. So एक जो amino acid है, it means कि एक से ज़्यादा codon उसके लिए कोड करता है. We have these 20 amino acids which are present in nature, and they will form all natural proteins. This is called degeneracy. This process where more than one codon codes for a single amino acid is known as degeneracy of the genetic code. Only methionine and tryptophan, which are coded by a single codon, that is AUG for methionine and UGG for tryptophan respectively. Otherwise, all other amino acids are coded by more than one codon. Then codons specify same amino acids differs only with respect to the third nucleotide of the triplet. For example, GUC, where GU is common, this C varies, then GUU, GUA, GUG. So the last base changes or show flexibility of all the codes, and these all codons codes for one amino acid, that is valine. And this flexibility in the anticodon side is known as Wobble pairing, which is responsible for this degeneracy of genetic code. जब ट्रांसलेशन होती है तो हर एक जो कोडोन है वो कोड करता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, और ये कोड करता है थ्रू दिस tRNA, बिकॉज tRNA कंटेन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन, जिन्हें हम बोलते हैं एंटी कोडोन्स, और वो कोड करते हैं एक अमीनो एसिड के लिए. जो tRNA होता है उसके एक्सेप्टर आर्म में अमीनो एसिड को ये कैरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस कोडोन. देन इन केस ऑफ tRNA जो थर्ड एंटी कोडोन होता है वो शो करता है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से एक ही tRNA बहुत सारे कोडोन्स को स्टडी कर सकता है, जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडोन्स द्वारा कोड किया जाता है. सो द पेयरिंग एट द थर्ड बेस पेयर इज रादर लूज और लेस स्ट्रिंजेंट. तो जो थर्ड बेस पेयर की पेयरिंग होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है. देन द फर्स्ट टू बेसिस अलाउइंग अ सिंगल काइंड ऑफ tRNA टू पेयर विद मोर देन वन एंटी कोडोन, जिसकी वजह से एक ही tRNA एक से ज़्यादा जो कोडोन्स हैं उनके लिए वहाँ पे बाइंड करता है और एक ही अमीनो एसिड को लाता है. फॉर एग्जांपल वी हैव फिनाइलएलानिन tRNA, जिसमें एंटी कोडोन प्रेजेंट होता है GAA, एंड इट रिकग्नाइजेस बोथ द कोडोन्स ऑफ mRNA, दैट इज UUU एंड UUC, और ये दोनों ही कोड करते हैं फिनाइलएलानिन के. दैट वी कैन सी इन दिस चार्ट ऑफ दिस कोड जेनेटिक कोड. जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो पूरे के पूरे जो किंगडम्स हैं उन सभी लिविंग किंगडम में सभी में कॉमन फीचर शो करते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो. जो स्पेशली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक्स है, मींस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, लाइक वी हैव माइटोकॉन्ड्रियल DNA,
उसमें जो mRNA बनता है उसके जो कोड्स हैं वो कोडोन्स हैं वो कोड करते हैं कुछ अलग अमीनो एसिड्स के लिए. दैट विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस presentation. For instance, we have eastern mammal cells. उसमें जो कोडोन्स होते हैं लाइक वी हैव AUA, ये स्पेसिफाई करता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड को rather than आइसोल्यूसिन. जो नॉर्मली AUA है दैट कोड्स फॉर आइसोल्यूसिन, बट इन केस ऑफ ईस्टर्न मैमल्स जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है उसमें ये कोड करता है दिस मिथ्योनिन के लिए. नेक्स्ट कम्स रीडिंग फ्रेम. रीडिंग फ्रेम सीक्वेंस है mRNA मॉलिक्यूल का जिसको रीड किया था इन द फॉर्म ट्रिपलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'. 3 पॉसिबिलिटीज़ है जिससे हम mRNA की जो रीडिंग फ्रेम है उसको रीड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट दैट विच न्यूक्लियोटाइड, कौन सा न्यूक्लियोटाइड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और द फर्स्ट बेस बाय पॉलीमरेज. देयर कैन बी 3 रीडिंग फ्रेम्स विच आर पॉसिबल. तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फ्रेम है उसमें हम इस फर्स्ट बेस को कंसिडर करते हैं फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट. देन इन सेकंड we can skip this first one starting from the second base, then in third case from third base. But जो correct reading frame होती है that starts with this one, that is the initiator codon जिसे बोलते हैं हम AUG. So the correct reading frame is set by recognition of the initiation codon which is AUG और ये कोड करता है for methionine और ये राइबोसोम इसको चेक करते हैं. Conversely, in case of small genomes of some bacteriophages, जो genes हैं वो overlap भी करती हैं and each has a different reading frame that we'll discuss in upcoming slide. Next comes the properties of the genetic code. So genetic codes show some unique features. The first feature is the genetic codes are present in the form of triplets. So जो भी genetic codes हैं वो present होते हैं triplets की form में, means 3 के combination में, and each triplets codes for a particular amino acid. तो जो RNA के ऊपर सीक्वेंसेस होते हैं बेसिस के वो प्रेजेंट होते हैं ट्रिपलेट्स की फॉर्म में जिसे हम कोडोन बोलते हैं और ये कोड करते हैं एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए. सो द कोडोन कंप्राइजेस ऑफ 3 letters, 3 words एंड ईच स्पेसिफाइज वन ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स. तो ये स्पेसिफाई करते हैं जो 20 अमीनो एसिड में से अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें. सेकेंड प्रॉपर्टी इज जो जेनेटिक कोड्स होते हैं दे आर डीजेनरेट, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. इट मीन्स जो एक अमीनो एसिड है दैट कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. तो 1 से लेकर 6 तक मैक्सिमम लिमिट है जो कोडोन्स हैं दे कैन कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड. एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं. वी आर सम एक्सेप्शंस लाइक मिथेनिन एंड ट्रिप्टोफैन. सो हैविंग मोर देन 1 कोडोन फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड इज रेफर्ड टू एज डीजेनरेट. हमारे पास केसेस हैं लाइक वी हैव AUG एंड UGG दैट कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड ईच. तो ये दोनों ही एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं while remaining 18 जो अमीनो एसिड है they are coded by 59 codons and 3 codons out of these are, that is out of 64 codons are and anti-codon, stopping codon और termination codon like we have UAA, UAG और UGA. ये जो 3 codons हैं they act as a termination codon or nonsense codon और stop codon. Next important feature of genetic code is its non-overlapping nature. It means इसमें same जो letter है वो repeat नहीं होता है. So the triplet in a sequence doesn't overlap. जो codons होते हैं एक दूसरे को overlap नहीं करते हैं. जो same letter है that is जो same letter है that is common in use in the formation of more than 1 codon. So here we can see here this is the codon. तो इसमें जो overlapping nature है so there will be different combination like we have AUU, this is the first combination, then the next combination will be the next codons will be UUU and जो next वाला है उसे overlap कर देगा ये. So it will form UUG, the next one that we can see here एक आगे shift हो जाएगा then UGC. So इस तरह से जो codes हैं वो overlap इसे नहीं करते हैं. The normal code genetic codes होते हैं they are non-overlapping. Next feature is its commaless nature. It means genetic codes होते हैं they are continuous. इसमें कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं होती है. सो जेनेटिक कोड्स आर कॉमालेस. इट मीन्स कि देयर इज नो गैप और पंक्चुएशन ऑफ कॉमा इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 कोडोन्स. और ये इसलिए होता है कि जो कोड है दैट इज कॉन्टिन्यूस और इसमें कोई भी स्पेस वेस्टेड नहीं होता है बिटवीन द कोडोन्स. The next feature of genetic code is its unambiguous nature or non-ambiguous nature. It means जो
एक कोडोन है दैट कैन कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, ये एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकता है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन अनएम्बिगुअस कोड और डीजेनरेट कोड. इन केस ऑफ अनएम्बिगुअस कोड, जेनेटिक कोड विच इन विच ईच कोडोन स्पेसिफाइज ओनली वन अमाइनो एसिड, जिसमें एक कोडोन सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, दैट इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस जेनेटिक कोड. व्हाइल degenerate genetic code means where a single amino acid can be coded by more than one codon, जिसमें कि 1 से 6 तक codons हो सकते हैं. They will code for a single amino acid. For example, we have codon GGA that codes for glycine. So this codon will always code for a single amino acid, that is glycine, while there is a amino acid serine which can be coded by more than one codons, like it is coded by 6 codons, different codons. Then we have phenylalanine that is also coded by 2 codons, UUU and UUC. Glycine that is coded by 4 codons, and lysine coded by 2 codons. So this nature is known as degenerate codon. So there is no ambiguity in genetic code, and a given code always code for a particular amino acid only. तो एक जो कोडोन है वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है. नेक्स्ट कम्स इट्स यूनिवर्सल नेचर. तो जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग किंगडम है, उसमें जो ये कोडोन्स है सभी के लिए एक जैसे अमाइनो एसिड को ही कोड करते हैं. जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो सभी के सभी जो कोडोन्स हैं they are applicable for all types of living organism. The next comes this collinear nature. It means there is a sequence of amino acids in a polypeptide chain that corresponds exactly of the nucleotide bases on the gene or DNA. तो जो DNA के ऊपर sequences होते हैं nucleotide के, वैसे ही sequence में amino acid present होते हैं. That shows its collinear nature, जिसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि जो genetic codes हैं they are collinear. It means जो कोड्स प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर, देन इट विल फॉर्म एमआरएनए के जो ऊपर जो सीक्वेंसेस हैं उसी सीक्वेंस में जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं. दैट शोज द कोलिनियर नेचर ऑफ बोथ दिस कोडोन एज वेल एज द अमाइनो एसिड्स. दिस इज द कोलिनियर नेचर ऑफ जेनेटिक कोड. सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स. Next comes some exceptions in case of genetic code. So we have some exceptions. For example, we have one paramecium that is ciliate and some other ciliates. Here we have termination codon UAA and UGA. So ये जो codons हैं normally they are stopping codon or termination codon, but in case of paramecium they code for one amino acid that is glutamine. So this is an exceptional case. The next जो genetic codes होते हैं normally they are non-overlapping, overlap नहीं करते हैं, but we have one bacteriophage that is this 5174. This bacteriophage has nucleotide that is 5375 nucleotides which codes for 10 proteins, but जो requirements है इसकी basis की that is 6000 bases. So जो ये requirement है ये पूरी की जाती है by overlapping of these codes. So here this is exception in case of bacteriophage, and this bacteriophage, then this gap is covered by overlapping of some genes like we have EBK genes. इसमें overlapping होती है जिसकी वजह से जो gap है that is filled. Then nucleotide sequences at the beginning of E gene is contained within D gene. तो इसमें जो overlapping होती है which is exception. Then similar overlapping is found in case of simian virus which causes cancer, that is SV40. तो इसमें भी इस तरह की overlapping देखी जाती है. So this table shows some exceptions in universal genetic code. Firstly we have bacterial DNA. इसमें माइक्रोप्लाज्मा है. माइक्रोप्लाज्मा में जो कोडोन है that is UGA, that is basically a stop कोडोन, ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन के लिए. Then in mitochondrial DNA जो कि ह्यूमंस के केस में प्रेजेंट होता है, इसमें जो UG है दैट इज स्टॉप कोडोन, बट हियर इट कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन. देन AU8 नॉर्मली कोडोन कोड्स फॉर आइसोल्यूसिन, बट in case of mitochondria it codes for methionine. Then other codons, similarly other codons which act as the stop codons, they codes for some amino acids in case of this mitochondrial DNA. Then nuclear DNA, in case of tetrahymena, here UAA which is a stop codon that codes for glutamine. Similarly in case of paramecium it codes for glutamine. So these are some exceptions in this universal genetic code. So in case of extra chromosomal genetic material, that is mitochondrial genes, usually AGG and AGA code for arginine, but in human mitochondria they act as stop codon. Here in case of mitochondria, that is AGA and AGG, these both
normally codes for arginine, but in case of mitochondria, they act as stop codons. In contrast, UGA, which is a termination codon that codes for tryptophan. जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो UGA है ये वैसे नॉर्मली स्टॉप कोडन होता है, बट ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन के लिए, while this AUA that normally codes for isoleucine, but here in case of this mitochondria, human mitochondria, it codes for methionine. So these are some exceptions in case of this universal genetic code. So this was all about for our discussion about genetic code. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in the comment section. Thanks for watching. Have a great day.